नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने ही चैनल KFCS पर। गाइस बहुत ही ज़बरदस्त मैच डबल हेडर गेम जैसे-जैसे वर्ल्ड कप का एक-एक दिन निकलता जा रहा है, मैच और भी ज़बरदस्त होते जा रहे हैं और और जितना ज़बरदस्त मैच की हम उम्मीद करते हैं, उतना ही ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस कर रही है, जहाँ की टीम्स की आज बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ, उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त मैच हुआ नीदरलैंड के लिए। नीदरलैंड ने एक और बड़ा अपसेट किया, नीदरलैंड की टीम ने अपसेट नहीं किया बल्कि एक संदेश भी दिया, जिसके बारे में पूरी बात करूँगा। नीदरलैंड की टीम ने आज जिस तरह का परफॉर्मेंस किया उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड। एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच और इस मैच के बारे में बात इसलिए भी करनी ज़रूरी है क्योंकि इस मैच में वो सब कुछ हुआ जो एक प्रॉपर ओडीआई फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आजकल की दुनिया जो है टी20 फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा देखने पसंद कर रही है, टी20 फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। तो सवाल तो उठते हैं कि यार क्या ओडीआई फॉर्मेट का फ्यूचर जो है वो ख़त्म होने जा रहा है? क्या वर्ल्ड कप हमें 50-50 फिर देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप तो हर 1 से 2 साल में हो रहा है। तो क्या ऐसा देखने को मिलेगा? तो इसका जवाब जब भी ऐसे सवाल उठते हैं ना, तो ऐसे मैचेस को देखा जब जाता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हर फॉर्मेट का एक अपना एक महत्व है, जिसको ये टीम्स जब परफ़ॉर्म करती है, एक नेल बाइटिंग फिनिश जिस फिनिश की आवश्यकता थी इस वर्ल्ड कप को हमें पहली बार देखने को मिला, आखिरी ओवर में जाके मैच डिसाइड होता है। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जिसमें 750 से ज़्यादा रन बने और मैच का जो रिज़ल्ट है वो 100 ओवर के बाद ऑलमोस्ट 100 ओवर के बाद हमें देखने को मिला मैच का रिज़ल्ट क्या होने वाला है। इतना ज़बरदस्त मैच था, उसके बारे में अभी बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। क्या ज़बरदस्त मैच हुआ कि अगर मैं बात करूँ न्यूज़ीलैंड की और ऑस्ट्रेलिया की टीम आज ट्रेविस हेड को मौका दिया। बातचीत ये भी चल रही थी कि क्या ट्रेविस हेड जब टीम में आते हैं तो किस टाइप के चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, कौन होगा ऑलराउंडर, कौन किसकी जगह आएगी, क्या मार्श बाहर बैठेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने उन सवालों के जवाब आज दिए और मुझे लगता है कि अ, जवाब मिल चुका है। उन्होंने जिस टाइप का कॉम्बिनेशन आज खिलाया, मिशेल मार्श जिसको हमने नंबर 3 पे खेलते हुए देखा है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि मिशेल मार्श नंबर 3 पर खेल रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट में। हमने साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में देखा था जहाँ पर नंबर 3 पर कंट्रीब्यूट कर रहे थे मिशेल मार्श। तो मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा बेहतर सोच है ऑस्ट्रेलियन टीम की कि आप एक ऑलराउंडर से थर्ड नंबर पे भी खिला रहे हैं और मार्श जो है आपको बॉलिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसके रिज़ल्ट ये हुआ कि आज ग्रीन की जगह इन्होंने ट्रेविस हेड को मौका दिया। तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है सही टाइम पे पिक कर रही है। हालाँकि बात हम करेंगे उनके वीक पॉइंट्स की, लेकिन आज ट्रेविस हेड ने जो ज़बरदस्त पारी खेली, मैं समझता हूँ ट्रेविस हेड ने जो आज ज़बरदस्त पारी खेली, इसका कोई तोड़ नहीं था। बहुत ही ज़बरदस्त मैच और मुझे लगता है कि यार सही में आज का जो मैच था वो देखने लायक था। तो हमारे साथ आ चुके हैं हमारे रेगुलर व्यूअर। हेलो अभिनव, कैसे हैं आप? न्यूज़ीलैंड ऑलमोस्ट वन द मैच, बिल्कुल ये न्यूज़ीलैंड ने मैच लगभग जीत लिया था और कहते हैं ना जो एक जिगरा होना चाहिए चेज़ करते हुए, वो जिगरा उन्होंने दिखाया कि यार हम ना कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमें जीतने की बात हाँ, अगर हम चेज़ करने पे आए तो हम चेज़ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर आज केन विलियमसन होते तो शायद ये चीज़ हो भी जाता। फिर जो भी हो टीम ने एक बहुत ही बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस किया। अगर मैं बात करूँ न्यूज़ीलैंड की टीम की और उन्होंने आज जिमी नीशम को मौका दिया चैपमैन की जगह। वो फ़ोर्स चेंज था जिसमें चैपमैन को निगल हो जाता है। चैपमैन को ज़्यादा मौके भी नहीं मिले। आज नीशम को मौका मिला तो नीशम ने एक बेहतरीन बैटिंग का मुज़ाहिरा किया आज और बॉलिंग भी अच्छी हुई न्यूज़ीलैंड की तरफ से। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट भी किया। ऑस्ट्रेलिया पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई, हालाँकि न्यूज़ीलैंड ने 50 ओवर पूरा खेला, लेकिन मैच नहीं जीत पाए। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त मतलब कितना भी कहो कम है। ये मेन टाइम इस टाइम पे जो है ऑस्ट्रेलियन टीम ने जिस तरह से
अपने को पिक किया है। एडम जम्पा की बॉलिंग की बात करें या हेज़लवुड की बॉलिंग की बात करें, अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड बहुत ही ज़बरदस्त खेले और न्यूज़ीलैंड की तरफ से तो शतक वीर है, दूसरा शतक है रचित रविंदर का। तो समझना होगा इस बात को कि ये रचित रविंदर जो एक नया टैलेंट निकल के आया है इस टीम के लिए, नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लेफ्ट हैंड बैट्समैन और इनके जो शॉट्स होते हैं क्या ज़बरदस्त होते हैं। दूसरा शतक है ये इनका, एक हाफ सेंचुरी आ चुकी है इनके पिछले मैच में भी। डेरिल मिशेल ने भी 50 प्लस बनाया। तो ये टीम जो है कंप्लीट नज़र आ रही है। न्यूजीलैंड की टीम भले ही ये मैच हार गई, लेकिन दोनों टीम ने जो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया है और मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है बहुत ही ज़बरदस्त टीम नज़र आ रही है और अच्छा टक्कर देखने को मिलेगा सेमीफाइनल में जब टॉप 4 की टीम्स आएगी। एज ऑफ नाउ टॉप 4 तो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और इंडिया होगी। बाकी देखते हैं, अभी वर्ल्ड कप के काफ़ी मैचेस बचे हैं। तो अब हम नेक्स्ट मैच की तरफ बात करते हैं, उससे पहले एक कमेंट ले लेते हैं। नेदरलैंड न्यू चैंपियन, बिल्कुल नीदरलैंड की जीत जो है वो सिर्फ नेदरलैंड की जीत नहीं है, ये क्रिकेट की जीत है, ये उस हर कंट्री की जीत है जिनके जिन लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं होती है, टैलेंट बहुत होता है लेकिन उस टैलेंट को निखारने के लिए मौका नहीं मिलता है। मौके पर आपको मौके का हमेशा इंतज़ार रहता है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जीत हमेशा मोटिवेट करेगी मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम कंट्रीज़ को क्रिकेट प्रमोट करने में। ये क्रिकेट का प्रमोशन बहुत अच्छा होगा। और आज बांग्लादेश जो हारी है, वो कहीं न कहीं उसके लिए बांग्लादेश खुद ज़िम्मेदार है। बांग्लादेश की टीम, उन्होंने मेहदी हसन मिराज के एक्सपोज़र में तौहीद हृदोई जैसा बल्लेबाज आप ड्रॉप कर देते हैं। महमूदुल्लाह जैसे को जिनको ऊपर खिलाना चाहिए, वो लोअर डाउन द ऑर्डर नंबर 7 पे बल्लेबाजी करते हैं। मैं समझता हूँ आज बांग्लादेश की टीम जो हारी है, उसके वो खुद ज़िम्मेदार है, इस तरह का परफॉर्मेंस होना नहीं चाहिए था और उम्मीद थोड़ी बेहतर होती है, पर जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया बांग्लादेश की टीम ने, ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। फैंस ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहे थे कि यार इस तरह का परफॉर्मेंस आएगा इस टीम से। बांग्लादेश की टीम ने जिस तरह से स्टार्ट किया, मुझे लगता है कि एक टाइम पे लग रहा था कि यार ये टीम ना जीत जाएगी आज मैच, क्योंकि बांग्लादेश की टीम की जो बॉलिंग थी आज अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से स्कॉट एडवर्ड्स मैच को बाहर लेकर चले गए अपने दम पर, और स्कॉट एडवर्ड्स ने वही काम अफ्रीका के अगेंस्ट भी किया था, जिसमें टीम ने डिफेंड किया बहुत अच्छे से टारगेट को और आज रेगुलर इंटरवल्स में विकेट चटकाए। पॉल वन मिक्रन की बात करूँ, बेस्ट लीडे की बात करूँ, बेस्ट लीडे की थ्रो की बात करूँ, जो उन्होंने 24 लगभग 24 यार्ड से वो थ्रो मारा, बहुत ही ज़बरदस्त आज नीदरलैंड की टीम ने परफॉर्मेंस दिखाई है। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है गाइस, आप लोगों को सोच के लगेगा, ये नीदरलैंड की टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद एक भी सिंगल गेम नहीं खेला। प्रैक्टिस मैच खेलने गए तो वहाँ पे एक मैच हुआ, उसमें भी आपकी आधी टीम जो है अ, आधा मैच होता है जिसमें से ऑस्ट्रेलियन टीम बॉलिंग कर रही होती है, उनको बॉलिंग करने का भी मौका नहीं मिलता है। तो इतनी आधी अधूरी प्रैक्टिस में भी अगर आप 2 टीम्स को, 2 टेस्ट नेशंस को हराएँ, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात एक टीम के लिए। तो ये एक अचीवमेंट होगा इस नीदरलैंड की टीम के लिए। और आप ये सोच के रह जाइए कि आज बांग्लादेश की टीम ऑफिशियली आउट हो चुकी है। पहली टीम बन चुकी है बांग्लादेश की जो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। अभी 9 टीम्स बची है, उसमें नीदरलैंड भी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट के लिए, ओडीआई फॉर्मेट के लिए बहुत अच्छी चीज़, मुझे ऐसा लगता है। नीदरलैंड बेटर देन बांग्लादेश, बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का जो टाइम है वो बहुत ख़राब चल रहा है और उसके लिए शाकिब अल हसन ज़िम्मेदार है। लखनऊ का वेदर कैसा रहेगा डिफेक्टेड, बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा-सा आज की मैच की थोड़ी बात कर लेता हूँ मैं, फिर मैं आऊँगा आपके इस कमेंट पर। तो आज का जो मैच था बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। फर्स्ट गेम की अगर मैं बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इसमें हमें शतक देखने को मिला ट्रेविस हेड की तरफ से, बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली डेविड वार्नर की तरफ से। पैट कमिंस, उन्होंने कप्तानी पारी मैं कहूँगा, जिन्होंने एंड टाइम पे अच्छे रन्स बनाए, जिसका रिजल्ट आज आप 5 रन से मैच जीते। पैट कमिंस ने विकेट्स भी चटकाए, साथ के साथ रन्स भी बनाए। मैं समझता हूँ पैट कमिंस ने आज कप्तानी पारी खेली और एन मौके पर विकेट्स भी चटकाए, एडम जैम्पन ने विकेट्स चटकाए।
ऑस्ट्रेलियन टीम, अब मेरे को लग रहा है कि ये टीम जो है अच्छी नज़र आ रही है। ट्रेविस हेड के साथ वार्नर ओपन, फिर उसके बाद मार्श, फिर स्टीव स्मिथ, फिर लमानस लबुशेन आ गए, फिर आपके मैक्सवेल हो गए, फिर आपके 4 प्रॉपर बॉलिंग। तो पाँचवा बॉलर का जो रोल है वो मैक्सवेल और मार्श दोनों बखूबी तरीके से निभाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये टीम अगर खेलती है तो ये टीम कुछ भी कर सकती है, थोड़ा सा बैलेंस नज़र आता है। और ट्रेविस हेड ने जितनी बेहतरीन तरीके से आज खेल रहे थे, एक समय पे मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम आज 500 रन बनाएगी और ट्रेविस हेड आज डबल सेंचुरी लगाएंगे, क्योंकि जिस बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी, आप लोग यकीन नहीं करेंगे गाइस, 10 ओवर में 118 रन हो गए थे पहले 10 ओवर में। वहाँ से ऐसा लग रहा था कि ये टीम क्या ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करेगी। 20 ओवर में 200 रन हो चुके थे, लेकिन उसके बाद जो विकेट्स लेने शुरू किए, ग्लेन फिलिप्स ने तो 3 विकेट चटकाए, इन्होंने गेम को पूरी तरह से चेंज किया, न्यूजीलैंड की तरफ लेके गए और पूरी टीम को ऑल आउट किया। एट द एंड पैट कमिंस ने चौके-छक्के लगाए, 1 ओवर में 3 छक्के लगाए, बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी हुई। और एट द एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छा टारगेट रखा, अच्छा टोटल था, लेकिन जिस तरह से ये खेले इनके ओपनर्स, बहुत ही ज़बरदस्त, काबिल तारीफ, मज़ा आ गया इस मैच को देख के। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और इस वर्ल्ड कप को एक नेल बैटिंग फिनिश की आवश्यकता थी, लास्ट ओवर फिनिश, जिसमें बहुत ही ज़्यादा रोमांच, आज रोमांच बहुत ही ज़्यादा था। और ये पहला मैच था जो कि देखने में बहुत मज़ा आया, हालांकि इससे पिछला वाला गेम भी बहुत बढ़िया था, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट से ज़रूर जीता है, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है उस मैच में लग रहा था कि यार जीत जाएगी, लेकिन जीती नहीं। बैड लक था, मैं समझता हूँ। चलिए अब बात करते हैं नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश। नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश की मैं बात करूँ, बीसले बरेसी इस वर्ल्ड कप के उम्र दराज खिलाड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा उम्र अगर किसी की है इस वर्ल्ड कप में, वो है बीसले बरेसी ने 39 ईयर्स के हैं वो, 39 ईयर्स के हैं जिनको खेलने का मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ यार, बीसले बरेसी ने आज क्या ज़बरदस्त पारी खेली। स्टैट्स की मैं बात करूँ तो 2011 में इन्होंने अगेंस्ट बांग्लादेश खेला था। शायद इस चीज़ को देखते हुए इस टीम ने विस्ले बेरेसी का यूज़ किया, और विस्ले बेरेसी ने जो 41 रन बनाए वो बहुत ही इम्पैक्टफुल था। मैं समझता हूँ जब ऐसे गेम्स होते हैं, यहाँ पे एनालिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, जो मैचअप्स पे बात करते हैं, रिकॉर्ड्स पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये एनालिस्ट के अकॉर्डिंग प्लेइंग 11 आज बनी थी, जिसमें बेरेसी को आज मौका मिलता है, रेडेड वंडर मोर को बिठा दिया जाता है, आर्यन दत्त आते हैं बॉलिंग करने, 2 विकेट चटकाते हैं, पॉल विन मीग्रेन आते हैं विकेट चटकाते हैं। तो रेगुलर इंटरवल्स में जब आपकी विकेट्स जाने लगती है, तो टीम संकट में ज़रूर रहती है। और बांग्लादेश की टीम ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया सेकेंड इनिंग्स में, ऐसा लगा ही नहीं महमूदुल्लाह के अलावा कि कोई खेलने आया है। और मैं समझता हूँ कि आज फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त की है। नीदरलैंड ने कंप्लीटली प्रूव किया है कि ये टीम जो है अब टेस्ट नेशन बनने को रेडी है। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने, जितना ज़बरदस्त इन्होंने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ खेला वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, उतना ही ज़बरदस्त आज अपने 2 टेस्ट नेशंस को हराया है, आपने साउथ अफ्रीका को हराया है, आपने बांग्लादेश को हराया। और एशियन कंडीशंस में परफॉर्म करना अपने आप में बहुत बड़ी बात, क्योंकि एशियन कंडीशंस में तो आपको मौके भी नहीं मिलते, जब आपको मौके नहीं मिलते, एक्सपोजर नहीं मिलता, और फिर भी आप ऐसा परफॉर्मेंस करें, तो ये दर्शाता है कि आपके यहाँ क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्रिकेट खेल सकते हैं। और अगर थोड़ा-सा और सपोर्ट किया जाए तो ये टीम आगे बढ़ेगी। तो कुछ ऐसे नेशंस हैं जिनकी उम्मीदें हैं कि ये ज़रूर आगे जाएँगे, जैसे आपके नेपाल हो गए, आपके नीदरलैंड हो गए। ये कुछ ऐसी टीम्स हैं जो बिल्कुल आगे जाएगी कुछ आने वाले समय में। बांग्लादेश का मैं समझता हूँ ये डाउनफॉल है, ये जो हार हुई है, कहीं न कहीं समझने की आवश्यकता है बांग्लादेश को, कि क्या कौन से प्लेयर्स आपको खिलाने चाहिए थे, क्या बैटिंग ऑर्डर हो सकता था, प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर नहीं था इस टीम का, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त गेम। और इस जीत के साथ नीदरलैंड की टीम ने 11वें 10वें स्थान से छलांग लगा के सीधे 8वें पे पहुंच चुकी है। और सबसे आखिरी में कौन सी टीम है, वो है इंग्लैंड की टीम, सबसे लास्ट में पड़ी हुई है, करो या मरो का मुकाबला है। बात करते हैं, चलिए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड।
कोई भी गाइस मेरे साथ जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप आ सकते हैं। मैं दोबारा से लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। जी, आप आ सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कल के मैच की। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। भारत अगर कल का मैच जीतती है तो पहली टीम बन जाएगी क्वालिफाई करने वाली, और इंग्लैंड हारती है तो दूसरी टीम बन जाएगी डिस्क्वालीफाई होने वाली। तो ये बहुत ही अनयूजुअल चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड के फैंस थोड़े से दुखी होंगे क्योंकि कल इंडिया से मैच है और जीतना मुझे बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। इंग्लैंड की टीम के हालात जो हैं बहुत ही बुरे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरह की चीज़ें रहेंगी। और तो चलिए अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। प्रीव्यू करते हैं इस मैच का। अगर इस मैच की मैं बात करूं तो इंग्लैंड के लिहाज से ये ऐसा मैच है जिसमें आपको हर हाल में जीत दर्ज करनी है। सिर्फ जीत दर्ज नहीं करना है बल्कि नेट रन रेट को भी अप करना है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेलनी होगी। और जिस तरह का परफॉर्मेंस हुआ है, जिस तरह की शुरुआत हुई इंग्लैंड टीम की, आपने एक ही मैच जीता है वो भी अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके अलावा सारी टीम से आपको हार मिली है। तो इंग्लैंड की टीम का बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम पिच रिपोर्ट पे बात कर लेते हैं। कल का जो पिच रिपोर्ट पिच किस तरह का दिखाई देगा। अ, ओके, रूल्स पे बात करते हैं। चलिए उससे पहले आपने सही टॉपिक लेके आया अभिनव। ओडीआई के रूल सही है या नहीं? नो, मेरे को नहीं लगता ये रूल सही है। क्योंकि यार एक बात बताइए, पहले जो ओडीआई के रूल्स होते थे उसमें क्या होता था, बैटिंग पावर प्ले आप अपनी मर्जी से ले सकते थे। 40 ओवर के बाद आप कभी भी बैटिंग पावर प्ले ले लीजिए। और एक बात और, जो ये पावर प्ले इन्होंने बनाया है, पहले 10 ओवर में 2 फील्डर्स बाहर होंगे। जब 10 से 40 ओवर का गेम आएगा उसके बीच में आपके 4 फील्डर्स बाहर होंगे, और जब आखिरी के 10 ओवर का गेम आएगा उसमें 5 फील्डर्स बाहर होंगे। मेरे को उसका तुक समझ नहीं आता। और 50 ओवर के गेम में अगर आपके 2 बार बॉल्स चेंज हो जाती है तो ये भी मेरे थोड़े सवाल समझ में नहीं आता है। मतलब ये कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ी चीज़। तो हमारे साथ है राहुल अय्यर। सो हेलो राहुल, हाउ आर यू? Yes, hi Kunal, how are you? I'm doing fine. या, so Rahul, here is an important discussion. So first, let's discuss about that. Then we will talk about today's match. Discussion about the ODI rules again. Means previously there was some rules about power play that first 10 overs. Uh, at that time there was first 15 overs there will be a power play where 2 fielders are allowed outside the circle. After that there will be another 15 overs power play where more than there's 3 4 fielders, and there was one batting power play that a batting team can take it in that way. What is the rule on that? That only 2 fielder will be outside the circle. That is up to the batting team. But nowadays, what we are seeing, 3 power play, that is mandatory. First 10 overs, 2 fielders outside the circle. Another 40 overs, 4 fielders outside the circle, and last 10 overs, 5 fielder outside the circle. If anyone not be able to complete the over in time, then there will be a 4 fielder in the last over. And one more rule, two new balls. मतलब means after 25 over, new ball came. So in a one inning, ball changes 2 times. That makes a batsman little bit easier. Nothing for bowlers. So how you justify this rule, Rahul? Nothing for bowlers. Yeah, lots of the rules in favor of the batsmen are very skewed these days, and not just with regards to the power play, but I also feel when it comes to no balls. Before, uh, a height no ball was not a free hit, if I'm not wrong. Yes.
Height no Yes. balls were not given a free hit, but now all of a sudden, height no balls are also free hit. So it's that gives the batsman an extra advantage. In my opinion, you should only give free hit if it's a no ball by the bowler overstepping the crease. In my opinion, that should be the only time that a batsman gets a free hit. Otherwise, you're making it too batsman friendly. If even above the waist height full toss can be given a free hit, I think it's not fair on the Even bowler. even a captain, if captain is getting one more fielder outside the circle, and there will be one less fielder, their no ball is also free hit. So means a no ball of any type, it will be a free hit for a batsman. Any type of no ball. Yeah, it's very unfair to the batsman, in my I think opinion. bowlers, because batsman, if batsman knew Sorry, to unfair to the bowlers. Yes, correct. yeah. So he's saying that आईसीसी के स्किल की जगह मेरिट पर लाना चाहिए, जैसे हॉकी पहले ग्रास पर होती थी, स्किल प्ले में आती थी, अब हर तरफ टर्फ पर हॉकी होती है। ओके ओके। Okay. Abhinav is saying to make a cricket extraordinary, BCCI is making ordinary. Means now this format is become ordinary using these rules. You justify with this statement? Yes, in my opinion, I've always said that if you don't create a good contest between bat and ball in ODI cricket, you won't. People, it'll get too monotonous. There'll be too many high scoring games. You need something for the bowler in one day cricket. In T20 cricket, you want to prepare a flat wicket and make it favorable for the batsman. No problem, because as it is. Within the time frame, it is hard to hit in T20 matches. So you need some something for the batsman. It's already very difficult to hit within 20 overs, a lot of pressure on the batsman. But in one day cricket, you need, if you uh, don't make it a fair wicket, you will get too many high scoring games, and you'll have games which are skewed in favor of the batsman. That is my opinion. And plus, I think also some more rule changes need to be made with one day cricket. I think as far as the way the game is framed right now, if you look at one day cricket, each side plays 50 overs at a time. You see, if one team bats 50 overs continuously, and then the other team bats 50 overs continuously. So, from a spectator point of view, uh, you're having to sit for too long, 3 or 4 hours continuously. If you look at Test cricket, yes, Test cricket, there are 6 hours of play in a day, I agree. But there are breaks. You have 2 hours, then a lunch break, 2 hours, and then a tea break, then 2 hours, and then stumps. You are free for the rest of the evening. Rest of the evening is free. Then you get to come the next day. But in OT and in T20 cricket, you only play like per session 20 overs, and it lasts 1.5 hours. 1.5 hours, 1 hour, 40 minutes, maybe. So there is some stoppage in play in these two formats, whereas in one day cricket, that is missing. You get 50 overs continuously. So I think there has to be a way to break this up in some way. You have to, I think, make this match into 4 sessions of 25 overs each. I think I've suggested this on a previous show before, but you can have one team bats 25 overs, the other team bats another 25 overs, and then whoever is ahead after those 25 overs can choose whether they want to bat again or bowl again. So in this way, you make the game a little bit interesting, uh, and the middle overs also become very interesting, because I think the complaint of a lot of fans right now is that the middle overs are too boring. Overs 11 to 40 are getting
too boring, because not much boundary scoring is happening. Not many wickets might fall either, so it's not action packed. Those middle 30 overs. So you need something to change it up a little bit. And I would say maybe in these 25 overs, each block of 25 overs, you have five power play overs each. So that Yeah. means basically you will have first five overs 1 to 5 a power play, and you will have overs 26 to 30 another power play. You break it up in that way, then it makes for interesting viewership, in my opinion. So a lot of solutions have to happen to make ODI cricket interesting again. We have to change it. As a matter of fact, ODI cricket used to be a 60 over game Yeah. after all, and then it got shot into 50 overs. And I think even in between, it might have been 55 overs. I forgot exactly. I think it was 55 overs, might have been 55 over game at one point, but it got shortened to 50 overs ultimately. So you might have, and I don't want ODI cricket to get shortened to less than 50 overs. A lot of people have been suggesting you shorten it to 40 over match, but I don't want that. I think you should have a 50 over match, but you need to split up the 50 overs for each team. And that's what you need to do. Okay, okay. One question, Rahul, from you. Yesterday, I heard from the commentary of Gautam Gambhir also, Abhinav also asking same question. So let's see if you answer this question. Name the player who has open in Test cricket, and in T20 and ODIs he is playing as a middle order batsman. He is a current cricketer. A current cricketer. Okay, so Yeah, who opens for in Test except cricket? KL Rahul. Except KL Rahul because KL Rahul is in my mind in Okay, that way I when guess it he is Tom Latham, perhaps. I mean, I think Latham opens in Test cricket for New Zealand. I could be yeah, yeah, wrong. yeah. Yeah, right. It's correct. Right. Yeah, it is correct. Tom Latham. Yeah, Tom Latham. Yeah. Yeah, he justifies your answer. This answer is Tom Latham. Yeah, I thought Great. so. Great. Actually, I think yesterday I thought about KL Rahul. Means KL Rahul was open in England in Test cricket in middle order T20 and ODIs. Of course, KL Rahul is open in T20 cricket too. Oh, thank you, thank you. Yeah. Okay. Okay. So let's start for today's match. So Rahul, when I see Australia versus New Zealand, first of all, the team news means I was little bit surprised. You are putting Green out of the square, out of the playing 11. Suddenly, here is your opener, number three, Michelle Marsh, and Michelle Marsh and Maxwell is going to complete your fifth bowling option. So Rahul, how you feel when you see this type of team for Australian? Yeah, bringing head back was only the natural thing to do, and Cameron Green was not doing too well in the matches where he got a chance to play. He was not doing all that well. Cameron Green. In fact, I think he only played the first match for Australia. Oh yeah, he played against Netherlands as well, but against Netherlands also he failed pretty Yeah, much. against So India also. He was not that much. yeah, he played against India and Netherlands. He failed in both the matches, so I think it was only the correct decision to drop Cameron Green. In fact, if you look at this World Australian World Cup squad, um, before the World Cup began, I would definitely have not chosen Cameron Green in my playing 11. Yeah, He would definitely not be a choice for me. I definitely preferred Marcus Stoinis, Mitchell Marsh, and Glenn Maxwell over Cameron Green amongst all the other all rounders in this Australian team. yeah. But Rahul, today I will give the credit to Travis Head to win for Australia means really great innings from him. What an intent meant at one stage. What I am thinking that Australia is playing like a super over means 4-6 means Warner and Head was really great in first 10 overs 118 for 0. So Rahul, if we talk about Travis Head, this year belongs to Travis Head.
talking about 2020, talking about Test match, talking about World Test Championship final, talking about this World Cup, debut World Cup century. So, how you rate this player in 2023, Travis Head? What a year for him. Yeah, Travis Head has been brilliant, in my opinion, and he's not missed a beat. He right. I think this is the first time he played in this World Cup, and immediately he made an impact with such a huge knock, scoring a century, and that too for Australia. This is a bit of a rivalry match against New Zealand, and he managed to do well. Well, Rahul, whenever we see Australia versus New Zealand, we always think about bowlers will come into play. But today there was flat track where batsman enjoys batting, and in the last over we know the winner. At last, Jimmy Nisham was there, but unfortunate. Well, good century from Rachit Ravindra. So, Rahul, how you see the rise of Rachit Ravindra this World Cup? What a Yeah, player! Rachin Ravindra has really had a very good World Cup, in my opinion. He's done really well for New Zealand. He's kind of come out of syllabus because before this tournament, nobody would have thought of Rachin Ravindra as a batsman. People think Rachin Ravindra as a tail ender, but he has proven people wrong in this tournament. This tournament shows that he can bat as well, so he cannot be ignored in the team at any cost. And I think he will be a good batsman for many years to come for New Zealand. Yeah, of As far course. as Okay. Jimmy Neesham is concerned, I feel he missed out on a golden chance to defeat Australia, to get New Zealand over the line. New Zealand doesn't often win against Australia, even when they are almost as good as Australia, or better than Australia. Many times they have a habit of losing to Australia. It's somehow in their blood. Opportunities to defeat Australia anywhere, even in New Zealand itself, are very rare for the New Zealand team. So this was really an opportunity missed. And that last over, which Mitchell Stark bowled, he didn't bowl very well. Mitchell Stark was not bowling well at all in that over. He was getting saved because of good fielding in the deep. The fielders were doing very well and saving the boundaries. Otherwise, Mitchell Stark was not bowling that last over very well. Jimmy Neesham with seven to win from two balls. Jimmy Neesham had a full toss to hit. He could have hit that ball anywhere, and Yeah. he should have hit a sixer and equalized the scores for New Zealand. But that did not happen. He not only did not get a sixer, but he got run out coming for a second run, and with that, the match is over. Although mathematically New Zealand was still in it, they had to hit a six off the last ball, but you can't expect Lockie Ferguson to hit a sixer and win it for you. Yeah, of course. Okay, so Rahul, tell me truth. Can you imagine that in Dharamshala there will be a flat track and we will see the high scoring game today? Can we imagine? No, I couldn't have imagined it. No, I definitely didn't expect it. I thought there would be something for the bowlers in this pitch, and when I saw that New Zealand chose to bowl first, I thought New Zealand had a chance to bowl Australia out, but that did not happen. However, we shouldn't be too surprised because it was the same track where England scored 364 against Bangladesh, and also India managed to chase 280 against New Zealand. So this is not exactly a bowling paradise. Dharamshala is not a bowling paradise. It just has more assistance for pace than other grounds in India. Yeah. Okay, so Rahul, in our show, we always trying to troll Pat Cummins that he is not a good captain. But today, good knock at time where Australian team need more runs. That was the over of 19 runs, three sixes. So Pat Cummins was great, 14 ball, 37 runs. That was a T20 type of innings and two wickets from Pat Cummins also. So how you describe Pat Cummins today means captain's knock, can we say, because you are winning a match just by 5 runs margin and you are
picking two main wickets. Cummins taking the wicket of Rajit Ravindra and Matt Henry. Uh, so Rajit Ravindra was a big wicket. So how you rate today the captain Cummins? Yes, Cummins has really stepped up as a captain in this tournament in the last two matches or so. He has really done well for in Australia. Now Australia is in a position where they should be able to qualify for the semi-finals. They started the tournament very badly, but now they're on a four-match winning streak. I think they will definitely go on to make the semis from here. And now, honestly, I think we can be more or less sure of who the last four are going to be. I think it's going to be India, Australia, New Zealand, and South Africa. Yeah, most probably. Okay, so now let's move to the second game. This is the first game in Kolkata in a World Cup. Rahul, win the toss, choose to bat means what type of confidence shown by Netherlands team and presence of mind also. I think Rahul, a playing 11 is decided by a cricket analyst, I guess, because when I see Wesley Baresi, he was a member in 2011 when World Cup was in India, and he was playing against Bangladesh. He has a good knock against Bangladesh also. And today, finally, Wesley Baresi plays and 41 runs came. So, can we say that yes, there is some role of analyst also to decide a playing 11 against such team? Yes, definitely. The sport is nowadays driven by lots of analytics. So it's no surprise now that analytics is driving decisions on the field. It's become almost a necessity in the modern world to have analytics on your side. And Netherlands has made very good use of it. They've already won a match by defending a total, that too against South Africa, arguably Yeah. the strongest batting lineup. So they felt confident that if they could get a decent score on the board, they can put Bangladesh under pressure, and that's what happened. Yeah. So Rahul, can we say that this win is a win of cricket, win of ODI format means everyone is saying that ODI format has no future. We are in a trend where T20 is there. There is no time to see 50 overs game. But today, nail batting finish Australia versus New Zealand and Netherlands beat Bangladesh means score was real less means 229 in Eden Garden means very less here means it can be easily chaseable, but you don't allow Bangladesh team means you are not bowling like a Pakistan. What Pakistan have done against Africa, they can win it, but they are not be able to win. But Paul Van Mikren, I will give credit to him. He took main wickets. So Rahul, how you see Netherlands team win? It is survival of ODI format. Yeah, definitely. We've been saying this tournament is short of thrilling matches, but yesterday we had the thriller between South Africa and Pakistan, and today between Australia and New Zealand. But I'll tell you one thing: this tournament has not been short of, and that is upsets. We've Yeah, seen Afghanistan defeating England and England Pakistan. Netherlands has now defeated South Africa and and Bangladesh. Bangladesh. So we've seen a lot of upsets in this tournament, and one thing we know is that this tournament is still going to be very close. It's not going. It's going to be very competitive. Yeah, of course. Yeah, of course. So let's come to tomorrow game that is India versus England. Now England is in the last position, so it is a battle between topper and loser. So bottom of the table topper and table topper. It is table topper versus bottom of table topper. So India versus England. What is your expectation, Rahul? What type of approach should be from Team India tomorrow? About playing 11. Any changes you are expecting? You want Surya I Kumar Yadav again? I mean, definitely not. But I guess there is no choice with Ishan Kishan out injured and Hardik Pandya injured. They'll have to play Surya Kumar Yadav and hope that the batting never comes to him. But tomorrow is a match where India should bat first against England, because on Lucknow wicket we can definitely put England under pressure if they're chasing even 280 or 290 in this tournament.
even 250 might be enough for this English team. They are not scoring above two. I don't think they've scored above 250 in many matches in this World Cup. I think except 280 against New Zealand, and then three and 360 odd against Afghanistan. After that, it's been all downhill for England. They're not able to make any big scores in this tournament. So I think India should bat first. We've never batted first in this tournament, and also England, they will struggle to chase at Lucknow. So we should make them bat second. Yeah, one news is also coming that they are bringing Ashwin in place of Siraz, giving rest to Mohammad Siraz. Means main bowler will be Shami and Bumrah. So you agree with this combination? Three spinners, two fast bowlers. Yeah, definitely on this pitch, it feels like spinners will play more of a role. So we should definitely choose spinners in our squad to exploit the conditions. Sometimes you shouldn't look at just form; you have to look at horses for courses when you do selections. Yeah, of course. So let's hope great game India versus England. So Rahul, when we seeing this England team means David Malan, Johnny Bairstow loves to play against Team India. Josh Butler loves to play. Joe Root is there. Um, Ben Stokes is there. So many big players, but still their bowling is not that great. David Willey, uh, not impressive. Mark Wood is also not so impressive. So Rahul, your comments on England team means they are almost out of the tournament. Tomorrow after lose, they are officially out. Already Yeah, Bangladesh is out of the tournament. it's going to be very tough for England to come back in this tournament. It's almost impossible, to be honest. The only possibility of England qualifying for the semi-final still is a mathematical one. It's not a practical possibility. Yeah, of course, already. So let's see how the game will goes on. But I think India should take new challenges before semi-final. Means we don't want to lose. Of course, a champion team should win each and every game of the World Cup. That will be a perfect domination in a home soil. But we should also defend target. We are always goes on chasing. So let's see how much we can smash these bowlers. Rahul, Adil Rashid versus Virat Kohli. This is very old battle. Can we see same battle tomorrow? Adil Yes, Rashid versus Virat absolutely. Kohli. It's going to be one of the key battles in India versus England. Adil Rashid has gotten out many times before, but Virat Kohli is capable of scoring runs at the same time. So that's going to be a very interesting battle tomorrow. Yeah, so Rahul, let's see how the game will goes on tomorrow, and hope for India win it, and we will become a first team to qualify for semi-final because official qualification points is 12. When you are 12 points, you are officially qualified for semi-finals. So England will become a second team to be out of the World Cup, and India become the first team to qualify for semi-final after this win. So let's hope for a great game. Thank you very much, Rahul, for your Thank you, time Kunal. for discussion. And see you tomorrow, and we See you will have a tomorrow. great discussion about this matches. Thank you very much. So Yes, thank you very absolutely. much. Okay, Yeah, thank you. Bye. yeah. So thank you very much, everyone. So how you like the discussion? If you want more discussion like this, just subscribe KFCS and enjoy World Cup also. In few days, I'm back with a commentary also. Watch along, so that you will also enjoy that. For that, what you have to do, just subscribe KFCS and just press the bell icon so that you will get the notification when I will be live. So thank you very much, guys. I hope you enjoy the discussion between me and Rahul and Avinav comments also. There will be a very interesting discussion today. So just share this video to everyone and have your views also. Your views are always valuable for us that motivate us to make a good video. Till then, guys, thank you very much. Goodbye and good night.
See you tomorrow with another match preview. Till then, thank you very much. Goodbye.